You can be trapped in learning loop while learning skills. So don't learn skills. You can say, why not do that? Why we shouldn't learn skills? So let me give you little context. You watch a video on YouTube, how to learn this skill, or how to make $10,000 a month, or something like top 5 skills to learn in 2024. And then you pick something. You can be confused what to pick, but then you pick something because someone is saying that and someone is making money from that. So you pick something, you try that for a few days, and then तुम्हें समझ नहीं आता है कि भाई करना क्या है उस स्किल के साथ, what I need to do with it, how I can monetize that skill, and you will be fucked and then start learning something new again. So this is called learning loop, or the trap of learning skills. And this is the position where I was in last year. So let me give you my little backstory. I was learning different skills from the last 2-3 years: coding, then editing, writing, different stuffs, graphic designing also. And till the last year, I was just learning without having any goal or having any vision. I didn't know कि भाई करना क्या है इसके साथ. I was always confused what to learn, what to do. So I'm not saying I have क्या बोल रहा हूँ, क्या ही इंग्लिश है, okay. So I'm not saying कि I have clarity, basically 100% clarity right now. I'm not saying that, but I have better clarity as compared to my last year. So let me tell you why you shouldn't learn skill at a first place. Yes, you shouldn't learn skills, or you shouldn't learn skill like the way I did, like the way I just told you. ठीक है, एक अब तुमने वीडियो देख लिया एंड जस्ट माइंडलेसली कोई चीज़ सीखने लगे. दिस इज़ वेरी रॉन्ग अप्रोच. सो let me tell you what's the right approach to learn skills, and which I'm doing right now. So that is building projects. Building projects is much better than learning a skill mindlessly. What I mean by building projects, so building projects basically means having a particular goal, having a particular set of goals in mind to learn a thing. बिकॉज जब हम स्किल सीखने की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं सेल्फ लर्निंग की, तब हम बात करते हैं कि हाउ वी कैन बी अकाउंटेबल, हाउ वी कैन बी सेल्फ सफिशिएंट, इंडिपेंडेंट. बिकॉज हमें एजुकेशन सिस्टम से नहीं जाना है. वी नीड टू ब्रेक द मैट्रिक्स, समथिंग लाइक दैट. दैट्स वाई वी आर लर्निंग स्किल्स. दैट्स वाई मेजोरिटी ऑफ द जनता स्किल सीखते, राइट. बट द प्रॉब्लम इज, जब हम स्किल भी सीखते हैं ना, हमारा जो अप्रोच है, इट वॉज लाइक द एजुकेशन सिस्टम, इट वॉज लाइक द सोसाइटी टीचर्स, जो कि होता है कि भाई तुम इस चीज़ को अभी सीख लो, देन बाद में जाकर उसको अप्लाई करो. लाइक आवर एजुकेशन सिस्टम, वी लर्न समथिंग एंड वी डोंट नो हाउ टू अप्लाई इट इन द रियल लाइफ, एंड देन मे बी वी कैन अप्लाई फ्यू पार्ट ऑफ दैट इन आवर जॉब और समथिंग लाइक दैट, मे बी आफ्टर 3 years, आफ्टर 4 years. और जब हम स्किल सीख रहे हैं ना इन दिस वे जो मैंने बताया, तब भी हम वही कर रहे हैं. वी डोंट नो कि हमें उसके साथ क्या करना है, एंड फिर भी वी आर लर्निंग इट, एंड वी हैव नो आइडिया कि हमें उसके साथ मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है, एंड देन वी ट्राई टू फिगर आउट कि अब करना क्या है. It's not a good approach. That's why keeping a project in mind, or keeping a goal or vision in mind, is much better than this kind of learning. So let me give you an example. Suppose you want to learn video editing. ठीक है, क्यों सीखना है वीडियो एडिटिंग? बिकॉज मे बी बहुत लोग बोल रहे हैं इसलिए. मे बी यू सॉ समवन जिसका तुम्हें एडिटिंग अच्छा लगा है, एंड ही इज़ मेकिंग अ टन ऑफ मनी ऑन वीडियो बाय वीडियो एडिटिंग, एंड यू आर रियली फैसिनेटेड विद दैट पर्सन. बेसिकली यू कैन गो फॉर वीडियो एडिटिंग. दिस इज़ अ गुड रीज़न. बट यहाँ पे एक अप्रोच हो सकता है कि नाउ यू जस्ट पिक एडिटिंग, यू जस्ट सपोज बाय एडिटिंग कोर्स, और यू कैन ट्राई फ्री रिसोर्सेज ऑल्सो टू लर्न एडिटिंग. अब इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, व्हाई यू शुड यूज़ पेड कोर्सेज ओवर फ्री रिसोर्सेज, एंड व्हेन यू मस्ट यूज़ फ्री रिसोर्सेज. सो सब्सक्राइब फॉर दैट. एंड ओके, सो तुमने एक पेड कोर्स और फ्री रिसोर्सेज उठाया फॉर वीडियो एडिटिंग. अब यू हैव स्टार्ट learning the editing. Then after 3-4 months you have enough knowledge of editing, and now you are start building a portfolio, because तुमने कोई वीडियो देखा है सपोज कि how I can monetize that by selling your skill to others, right, जिसका उस स्किल का या उस सर्विस का नीड है. For that you are making a portfolio, maybe Google Drive or website, and now you are trying to find clients. How? By messaging them on Instagram. This is a very shitty approach. ठीक है, एटलीस्ट इन 2024. डोंट टेक मी रॉन्ग, इस अप्रोच में बहुत लोगों को सक्सेस मिलता है. आई नो बहुत लोगों को इंटर्नशिप मिल जाता है, एंड देन दे कैन बिल्ड एजेंसी एंड स्टफ. बट
दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड और स्मूथ अप्रोच आई बिलीव, ठीक है। व्हाट आई बिलीव एंड व्हाट इज़ द अप्रोच यू शुड टेक, इसके बारे में बात करते हैं, बट दिस इज़ द अप्रोच जो बहुत ही ट्रेडिशनल अप्रोच है, ठीक है। और मे बी बहुत लोग तो भाई अभी भी फ्रीलांसर साइट में जाते हैं फाइवर वगैरह में एंड देन अप्लाई फॉर वीडियो एडिटिंग जॉब। भाई ऐसे तो मिल ही नहीं सकता है, ठीक है। 99% टाइम पे ऐसे मिल ही नहीं सकते इंटर्नशिप्स और फ्रीलांसिंग गिग्स। सो व्हाट्स द राइट अप्रोच टू डू? द राइट अप्रोच, सपोज तुम्हें अगेन वीडियो एडिटिंग वाला जॉनरा में जाना है, तो व्हाट इज़ द राइट अप्रोच टू डू कि तुम आज डिफाइन कर रहे हो योर प्रोजेक्ट कुड बी, आई वॉन्ट टू बिल्ड एन वीडियो एडिटिंग एजेंसी और अ वीडियो एडिटिंग बिजनेस where I will create videos for others by or in 3 months, ठीक है। So this is a very clear project. Your project is to build a video editing business where you will provide video editing services, creating content basically for others, and your goal is to make that happen in 3 months. अब why टाइम फ्रेम? अब यहाँ पे लोग बोल सकते हैं कि भाई टाइम फ्रेम क्यों देना है। बहुत लोग इस जगह में ऐड करते हैं कि by 3 months, by the end of 3 months, I will make $10,000 a month. This is also a kind of very popular challenge right now on social media. But I don't like to attach an output based goal or outcome based goal. I always like to attach a income or input based goal. Okay, so input based goal could be कि मुझे 3 months के अंदर इस चीज़ को अचीव करना है. That could be an input based goal. So there's a quote from Naval. I really like his philosophy. So Naval says कि be impatient with your actions but be highly patient uh, with your outputs, with your outcomes, ठीक है। बेसिकली अपना जो आउटकम है, अपना जो रिजल्ट्स है, उसको तुम जितना लॉन्ग टर्म के लिए रखोगे उतना बेटर है, ठीक है। एंड वहीं पे अपना जो इनपुट है, अपना जो एक्शन है, उसको तुम जितना शॉर्ट टर्म पे कर पाओगे उतना अच्छा है। बेसिकली मतलब टेक एक्शन जितना जल्दी हो सके, बट डोंट थिंक अबाउट आउटपुट और आउटकम्स, ठीक है। उसको थोड़ा सा डिले वाला जो बोलते हैं ना, डिलेड ग्रेटिफिकेशन, उस वाला प्रोसेस यहाँ पे बात हो रहा है उसमें, ठीक है। कूल। तो या दैट्स माई अप्रोच। एंड बिल्डिंग प्रोजेक्ट तो बेसिकली अब क्या है कि तुमने उस चीज़ को डिफाइन कर दिया कि मुझे इस चीज़ को अचीव करना है इन 3 months, सो दिस हो गया एक प्रोजेक्ट। अब नाउ लर्न स्किल्स टू मेक दैट थिंग हैपन, ओके। तो फॉर अ वीडियो एडिटिंग एजेंसी व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू फर्स्ट क्रिएट एन ऑफर। अब ऑफर क्रिएट करने के लिए नाउ मे बी यू कैन फॉलो एलेक्स ऑर्मोजी, ठीक है, एंड रीड इज बुक $100 million ऑफर, 100 million ऑफर्स, इट्स कूल बुक, ग्रेट बुक फॉर ऑफर क्रिएशन। सो बेसिकली देख रहे हो, द पॉइंट ऑफ व्यू इज़ वेरी डिफरेंट। बहुत लोग एलेक्स ऑर्मोजी को फॉलो करते हैं फॉर ईयर्स एंड ईयर्स, कुछ भी एक्शन नहीं लेते, ठीक है। दे आर जस्ट स्टडिंग और दे आर जस्ट डूइंग समथिंग एल्स, or they are doing anything other than the business or other than the offer creation or something like that. They are doing कुछ भी and then they are following Alex Hormozy, they are just sharing Alex Hormozy's reels. तो उसको बोलते हैं डिस्ट्रक्शंस, दैट इज़ नॉट लर्निंग। लर्निंग इज़ दिस, जब तुम, अब तुम्हें पता है कि माई प्रॉब्लम इज़ टू create an offer, for that I need to buy a book or I need to watch some videos or I need to listen a audio book, and then I'm going for that book, $100 million offers or Alex Hormozy's reels now. That makes sense, that is education. So this is the first step. Then maybe you can you have some problem कि अब मेरे पास ऑफर तो आ गया, बस उस ऑफर में मुझे ट्रैफिक कैसे लाना है। फॉर दैट यू कैन क्रिएट कॉन्टेंट, यू कैन बिल्ड पर्सनल ब्रांड, you can share your point of views, your thoughts, like I am doing right now. You can share your learnings, you can share your skills, you can showcase that okay, I am doing this, today I am building this offer, today I am learning video editing, something like that. And this is how you can create an audience, and most probably this is how you can increase your surface area of luck, ठीक है। सो लक के ऊपर भी हम एक बात करेंगे एक वीडियो में। आई रियली लाइक द कॉन्सेप्ट ऑफ 4 kind of लक्स फ्रॉम नवल रविकांत। सो या आई विल टॉक अबाउट दैट इन सम अदर वीडियोस, इसको मैं बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना चाहता हूँ। सो ये हो गया तुम्हारा प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। तुम एक प्रोजेक्ट बनाया एंड देन यू आर लर्निंग अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग, ठीक है। कूल। तो यही बेसिकली अप्रोच हो गया। दिस इज़ द अप्रोच आई लाइक टू टेक, एंड मुझे भी मतलब रिसेंटली मैं अप्रोच को ले रहा हूँ। आई एम नॉट वेरी एक्सपर्ट इन टू दैट। फॉर मी my main project is my personal brand right now, where I am learning how to persuade, how to talk better, how to write better, how to create videos better, how to edit better, something like that. So this is the project based learning, while my other project could be freelancing projects. And don't take too much projects at a time. Try to take 1 or 2 हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स एट अ टाइम, ठीक है। लाइक तुम सपोज एक प्रोजेक्ट कर सकते हो जो कि हो सकता है पर्सनल ब्रांड, एंड तुम्हारे एक और प्रोजेक्ट हो सकते हैं मे बी सम अदर बिजनेस, ठीक है।
It's not the personal brand led business, it's the other business, something like that. So yeah, this is it. This is the overall approach what I wanted to say. And if you like this video, तो hit the subscribe button, hit the like button, और share कर दो to the friend जो शायद अभी business बनाने के बारे में सोच रहे हैं, और जो शायद अभी freelancing और different skills learning के बारे में सोच रहे हैं. So yeah, thank you for watching. Bye.